इस वीडियो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करके दिखाया गया है और जितने भी पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम वन बाय वन कवर करेंगे कि कहाँ से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट उसको हाईलाइट करके दिखाया गया है। उसको मैं वन बाय वन बोल के दिखाऊंगा और समझाने की भी कोशिश करूंगा उस पॉइंट को। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के वो इस टॉपिक से शुरू होते हैं और यहीं से क्वेश्चन भी पूछने शुरू हो जाते हैं। स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले क्या है कि टू पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल स्टेमेन, द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टाक कॉल्ड द फिलामेंट एंड द टर्मिनल जनरली लोब्ड बाइलोब्ड स्ट्रक्चर called the anther. The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. A typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having two theca, that is, they are dithecous. The anther is a four-sided structure consisting of four microsporangia located at the corners, two in each lobe, that is, it is also called tetragonal. Microsporangia develop further and become pollen sac. A microsporangia is surrounded by four wall layers: the epidermis, endothecium, middle layers, and the tapetum. The outer three wall layers perform the function of protection and help in dehiscence of anther to release the pollen. The innermost wall layer is the tapetum. It nourishes the developing pollen grains. Cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. A group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue. Pollen grains represent the male gametophyte. Pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometers in diameter. Exine is made up of sporopollenin, which is one of the most resistant organic material known. It can withstand high temperature, strong acids, and alkali. No enzyme that degrades sporopollenin is so far known. Pollen grain exine has prominent apertures called germ pores where sporopollenin is absent. Pollen grains are well preserved as fossil because of the presence of sporopollenin. Intine, it is a thin and continuous layer made up of cellulose and pectin. When the pollen grain is mature, it contains two cells, the vegetative cell and generative cell. Vegetative cell is bigger, has abundant food reserve. Generative cell is small and floats in the cytoplasm of the vegetative cell. It is spindle-shaped. In over 60% of angiosperms, pollen grains are shed at this two-celled stage. Pollen grains are rich in nutrients. Pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market. In some cereals, such as rice and wheat, pollen grains lose viability within 30 minutes of their release. It is possible to store pollen grains of a large number of species for years in liquid nitrogen, that is minus 196 degrees Celsius, and this technique is also known as cryopreservation. Such stored pollen can be used as pollen banks, similar to seed banks in crop breeding programs. The number of ovules in an ovary may be one, that is in wheat, paddy and mango, to many papaya, watermelon and orchids. Ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicle. The body of the ovule fuses with funicle in the region called hilum. Hilum represents the junction between ovule and funicle. Integuments encircle the nucellus except at the tip where a small opening called micropyle is organized. The process of formation of megaspores from the megaspore mother cell is called megasporogenesis. The method of embryo sac formation from a single megaspore is termed monosporic development. Polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cell. The egg apparatus in turn consists of two synergids and one egg cell. Synergids have special cellular thickenings at the micropyle tip called filiform apparatus, which play an important role in guiding the pollen tubes into the synergids. A typical angiosperm embryo sac at maturity, though 8 nucleate, is 7 celled. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो बार बार क्वेश्चंस में पूछी जाती है। इस पार्ट से नीट 2021 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज।
तो बताना था, ये डायरेक्ट लास्ट वाली लाइन है 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड, ये इसका राइट आंसर था। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स shed from the anther to the stigma of a pistil is termed pollination. Transfer of pollen grains from anther to the stigma of the same flower is known as autogamy. Plants such as viola, common pansy, oxalis and commelina produce two types of flowers, that is chasmogamous or clistogamous. Clistogamous flowers which do not open at all. Clistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollen landing on the stigma. इस पार्ट से नीट 2022 के अंदर एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। सेकंड स्टेटमेंट थी क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पोलिनेशन। तो इसका आंसर था बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ये इसका राइट आंसर होना था। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from the anther to the stigma of another flower of the same plant is known as geitonogamy. Geitonogamy is functionally cross-pollination involving a pollinating agent. Genetically, it is similar to autogamy. Pollination part से यही है जो डेफिनेशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो पोलिनेशन हो गई वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from anther to the stigma of a different plant is called gynogamy. Only type of pollination which during pollination brings genetically different types of pollen grains to the stigma. नीट 2021 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, the term used for transfer of pollen grains from anther of one plant to stigma of a different plant which during pollination brings genetically different types of pollen grain to stigma is. तो उसके अंदर 4 ऑप्शन है, इसमें जो जीनोगेमी ये उसकी डायरेक्ट डेफिनेशन है, ये इसका राइट आंसर है। प्लांट्स यूज 2 abiotic wind and water and 1 biotic animal agent to achieve pollination. Majority of plants use biotic agents for pollination is more common amongst abiotic pollinations. Wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary. Corn cob, the tassels you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grains. नीट 2023 के अंदर इस पार्ट से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज फंक्शन ऑफ tassels in corn cob? तो इसका आंसर है to trap pollen grains. Pollination by water is quite rare in flowering plants and is limited to about 30 genera, mostly monocotyledons. It is believed, particularly for some bryophytes and pteridophytes, that their distribution is limited because of the need for water for transport of male gametes and fertilization. Pollinated plants are Vallisneria and Hydrilla, which grow in fresh water, and several marine sea grasses such as Zostera. Water hyacinth and water lily, the flowers emerge above the water level and are pollinated by insects and vines. Most important lines हैं ये, both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar. Among the animals, insects, particularly bees, are the dominant biotic pollinating agents. Insect pollinated flowers are large, colorful, fragrant and rich in nectar. नीट 2023 के अंदर इस पार्ट से क्वेश्चन आया था, लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर्स विद नेक्टर आर सीन इन। तो उसका राइट आंसर होना है इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट्स। ये जो पैराग्राफ है इन सम स्पीसीज से लेकर ये नेक्स्ट पेज तक जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ तक? द लार्वा ऑफ द मोथ कम्स आउट ऑफ द एग्स एट द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किसका लार्वा है, फ्लावर किसका है, तो इस तरीके से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूड सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसी को ध्यान में रखते हुए प्लांट्स ने कुछ ऐसे ही मैकेनिज्म खुद के अंदर डेवलप कर लिए ताकि वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को अवॉइड कर सके। तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या मेथड अपनाए हैं, वो हैं इन सम स्पीसीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइड। दोनों एक साथ मैच्योर ही नहीं होंगे। इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन। अलग अलग पोजीशन पे होंगे तो जो पोलन है वो स्टिग्मा तक आसानी तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ये खुद का उसका मैकेनिज्म है कि वो पोलन बेशक से स्टिग्मा के ऊपर आ जाए लेकिन वो पोलन ट्यूब ग्रोथ या उसको जर्मिनेट ही नहीं होने देगा। लास्ट है अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इफ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, removal of anthers from the flower bud
before the anther dehisces, using a pair of forceps is necessary. This step is referred to as emasculation. Emasculated flowers have to be covered with a bag of stable size, generally made up of butter paper, to prevent contamination of its stigma with unwanted pollens. This process is called bagging. इनकी definition important है, direct पूछ ली जाती हैं. Since two types of fusion, syngamy and triple fusion, takes place in an embryo sac, the phenomena is termed double fertilization. Primary endosperm cell (PEC) and develops into the endosperm, while the zygote develops into an embryo. Endosperm development precedes embryo development because endosperm is a rich source of nutrients from which embryo derive its nutrient. The coconut water from tender coconut that you are familiar with is nothing but free nuclear endosperm made up of thousands of nuclei, and the surrounding white kernel is the cellular endosperm. Endosperm may either be completely consumed by the developing embryo, that is pea groundnut beans, before seed maturation, or it may persist in the mature seed, for example in castor and coconut. Embryo develops at the micropylar end of the embryo sac where the zygote is situated. ये पूरा का पूरा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर लाइन से क्वेश्चन उठाए जाते हैं. Zygote gives rise to the pro-embryo and subsequent to the globular, heart-shaped and mature embryo. A typical dicotyledonous embryo consists of an embryonal axis and two cotyledons. The portion of embryonal axis above the level of cotyledons is the epicotyle, which terminates with the plumule and stem tip. The cylindrical portion below the level of cotyledons is hypocotyle, that terminates at its lower end in the radicle or root tip. The root tip is covered with a root cap. In the grass family, the cotyledon is called scutellum. At its lower end, the embryonal axis has the radicle and root cap enclosed in an undifferentiated sheath called coleorhiza. Epicotyle has a shoot apex and a few leaf primordia enclosed in a hollow foliar structure, the coleoptile. Seed is the final product of sexual reproduction and it is a fertile ovule. इस पैराग्राफ में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, एग्जाम्पल कि कौन सा एल्ब्यूमिनस सीड है, कौन सा नॉन एल्ब्यूमिनस सीड है. नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट. एग्जाम्पल है पी ग्राउंडनट. Albuminous seeds retain a part of endosperm as it is not completely used up during embryo development. Example है wheat, maize, barley, castor. Persistent nucellus is the perisperm. ये डायरेक्ट डेफिनेशन में पूछ लिया जाता है कि पेरिस्पर्म क्या होता है. Ovule matures into seeds. The ovary develops into a fruit. Wall of ovary develops into the wall of fruit called pericarp. In a few species, such as apple, strawberry, cashew, the thalamus contributes to fruit formation and such fruits are called false fruit, and the fruits which matures from the ovary are called true fruits. नीट 2022 के अंदर इस पार्ट से क्वेश्चन आया था. क्वेश्चन ये था कि विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड इन गिवन फिगर मेक्स इट ए फॉल्स फ्रूट. तो आप ब्लैंक दे रखे थे, तो जो सी ऑप्शन है थैलेमस, थैलेमस एक फॉल्स फ्रूट बनाता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा. फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन. सच फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. बनाना इज वन सच एग्जाम्पल. इस पार्ट से डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है, जैसे कि produce seeds without fertilization called apomixis. Apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. Occurrence of more than one embryo in a seed is referred to as polyembryony. इसकी भी डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ ली जाती है और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा. और आगे ऐसे ही नेक्स्ट हाईलाइटेड चैप्टर्स आएंगे, उसके लिए आप चैनल से बने रह सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं.